أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students, actually we are talking about one of the important subject on the bacteriology or microbiology, that is infection and the disease, which we call as infectiology. And this is the subject we are dealing. Although the subject is dry and boring, people do not want to listen. The thing is this, mostly. But we will try our best to do it in any way. So it is the most important part of the disease which we are dealing with. So there is actually a technical problem which is going on, but I want to deal with this subject, that is what we call as the bacteriology, that is what is the importance of some of the bacteria. Now, some of the bacteria which are important to us will deal with this subject. I said that this is a technical problem actually is going on. I don't know what is the reason. It is not working, and I'm very, very weak in the computer. I'm very, very weak person in computer science is concerned. I do not usually handle. I cannot, use this computer very well. How to do it, I don't know about it. But this is not my age to learn the subject. Now, this is a subject which we want to learn, is the Bacteroides fragilis. What is the importance of the Bacteroides fragilis is that it is one of the organisms which is included in the anaerobic bacteria. For the person who is sick and he is on the line of the inflammatory process, most commonly there are three types of organisms are possible at that time: gram-positive organisms, gram-negative organisms, and anaerobic organisms. Because the therapy you will choose should cover the gram-positive, gram-negative, and anaerobic. So, name some of the anaerobic bacteria. The anaerobic bacteria are the three anaerobes which are common. Actually, there are more than that. Fusiform Bacillus, for example, Fusiobacterium, Previtola, and the Bacteroides. Previtola, Bacteroides, Fusiobacterium. One of the Bacteroides is the Bacteroides fragilis, which we are dealing with this. Bacteroides fragilis. The introduction that is anaerobic, gram-negative, pleomorphic to rod-shaped bacterium. It is a part of the normal microbiota of the human colon, so it is part of the coliform bacteria, and is generally commensal. Usually, if this side it is commensal. Otherwise, it becomes opportunist and will rate that area which is going to be infected or inflammatory previously, etc., or morphology of that tissue is disturbed. So it is opportunistic organism. It is also common in those persons who are immunocompressed, suppressed, and also in diabetics. And it is also common in those persons where there are chances of the lower respiratory infection. Possibly they will invade the bronchi and the alveolus.
can cause infection if displaced into the bloodstream, causing the bacteremia or septicemia it can cause, or surrounding tissue following surgery. That is, it is of surgical importance. Skin infections, secondary infections, you can call this wound infection, and it may be it may invade the tissue, which is disease. Already mentioned our disease process of that area. That is why it is secondary invader or after trauma. So in traumatology also this is most important. Those who are appearing in the FCPS medicine and allied, or those who are appearing in the surgical and allied. But this organism is very, very important, the Bacteroides fragilis. Why we are learning this? Because we should know about something about the anaerobic bacteria. Because if you are zero in this, they said what are anaerobic bacteria, you said that they are anaerobes, that's all. Bacteria anaerobic, they are bacilli, which are present. Where they are present? Sir, I don't know. This is the answer. Surrounding, environment, pollutants, whatever it is, that is all wrong. It is actually the commensal in the colon, which is invading, where there is chance of opportunism, that is surgery or disease or the trauma. And this is how they are look like. Gram-negative, pink-colored organisms. They survive in the lowest oxygen. That is called anaerobic. They do not need oxygen for their replication. In the specific media which we used to culture the anaerobes. Habitat of this bacteria is that it is residing in the human gastrointestinal tract and is essential to the healthy gastrointestinal function, because it is the commensal, but it will definitely protect the other bacteria to enter, which are invasive bacteria. They fight against the invasive bacteria, and they do not want to welcome them at that area. Just like the human, the person who was living in one home and somebody is invading, you have to resist it. Just like this, they are working here, such as the mucosal immunity and the host nutrition. These are the function: mucosal immunity and host nutrition. As a mesophil, optimal growth occurs at 37 degrees centigrade and pH around 7. Slightly acidic media. This is Bacteroides fragilis. It shapes just like this. देखें अकड़ के खड़ा हुआ है ये आओ कर लो जो कुछ करना है fragility means that it is a bacteria. If you handle in the culture media, it will divide it into 2 or 3. Rod shaped, gram negative, rod shaped bacteria, gram negative bacteria, and pleomorphic. Different shapes are seen. Some are cocobacillus or bacilli, some are small bacilli. So they are rod shaped plus rod shaped and fragile. बहुत नाजुक जो है ना बैक्टीरिया है ये, अगरचे कि बहुत पावरफुल इन्वेजन करता है ये बैक्टीरियाइड्स फ्रेजाइलिस. इसी तरह से दूसरी जो प्यूटाला है, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो आपको बताए हैं वो उनका भी यही है प्रॉब्लम सेम. इसलिए इसको एक ही तरह से बताया जाएगा बैक्टीरियाइड्स फ्रेजाइलिस के नाम से. अगर हम इसको मिस कर देते हैं, फर्स्ट अगर हम नहीं बताए, तो फिर आपकी नॉलेज में कमी रह जाएगी. देखिए, अगर किसी को हासिल करना है तो 100% परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए उसकी. आई हैव टू द इंटरनल मेडिसिन बिकॉज इज वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वेरी ब्रॉड. इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं की गई है. सर्जिकल पार्ट भी इसमें आते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सर्जिकल भी डिस्कस किए हैं. ENT है, आई है, हर जगह हर चीज़ को डिस्कस किया है. अगर कोई आदमी हैरिसन को फॉलो करता है तो उसमें उसने देखा होगा, उसमें कोई पार्ट नहीं छोड़ा, उसने कोई पार्ट नहीं छोड़ा. इसमें पीडियाट्रिक्स का जहाँ पार्ट आया उसने पीडियाट्रिक्स भी डिस्क्राइब कर दी है.
इसी तरीके से सेक्रेटरी को डिस्क्राइब कर दिया है, बिहेवियर डिसऑर्डर को डिस्क्राइब कर दिया है. एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग their knowledge which should be gained by the internist as much that he can diagnose it or refer to the correct place. तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉलेज अगर लेनी है तो कम्प्लीटली लें. शॉर्टकट्स जो है ना वो अलाउड नहीं है. मेडिसिन में शॉर्टकट्स अलाउड नहीं है, वो आपको तबाह कर देंगे. जब आप पेशेंट्स को डील करेंगे तो फिर आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि करें क्या. Cells of the microbiology is the cells of the Bacteroides, Flagellaris, I already said pleomorphic, rod-shaped, gram-negative organisms, but they do not possess flagella or cilia, making it immotile. So it is an immotile organism. तो fragile है ये, that is what fragile. It is moving, the secretions हैं आपकी intestinal और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उससे ये दाएं बाएं होता है. हाउएवर इट डज यूटिलाइज पेरिक्टिस फिमरिया होते हैं इसमें फॉर एडेजन पर्पस टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. बैक्टीरियोइड्स फ्लैजेलिस also utilizes a complex series of surface proteins, जैसे lipopolysaccharide chains and outer membrane cycles to help survive the volatile intestinal microenvironment. वॉल्टाइल होता है इंटेस्टाइनल माइक्रोएनवायरमेंट, वॉल्टाइल होता है, ऑलवेज जो मूव कर रहा होता है. टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियम जो होती है रिप्लेस हो रही होती है. ऊपर से आप जो है जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हैं वो आ रही होती हैं, फ्लो जारी होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दबा रही होती है. उन्हें सर्वाइवल देना, जबकि ऑक्सीजन भी नहीं है वहाँ पे. तो उस वॉल्टाइल इंटेस्टाइनल माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इसका सर्वाइवल होना जो होता है वो अहम हो जाता है, क्योंकि ये बेनिफिशियल भी है. मैंने आपको पहले भी बता दिया व्हाट आर द बेनिफिशियरी इफेक्ट. ये करता है फाइट अगेंस्ट द इन्वेजिबल बैक्टीरिया. इसको भी अगर आप उड़ा देंगे और दूसरी बैक्टीरिया जो क्वालिफाई उसको भी उड़ा देंगे तो फिर दूसरे अपॉर्चुनिटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना एंटर हो जाएंगे और वो डिस्टर्ब करेंगे सिस्टम को. मिसाल के तौर पे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया विच इज़ एसोसिएटेड विद क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल, जिसमें मैंने लेक्चर एक आपको दिया था, और उसका मकसद ही ये था बताने का कि डिस्टर्बेंस आपने किया कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का तो वहाँ पे वो इन्वेट कर जाएगा. तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड एक ज़माने में 1974-75 में, और हमारे प्रोफेसर हैं मुश्ताक हसन साहब, तो हर एंटीबायोटिक के साथ वो बी कॉम्प्लेक्स दिखते थे. हम ही समझ रहे होते थे कि जो एंटीबायोटिक होती हैं उससे कमज़ोरी हो जाती है तो वो बी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं. हमने पूछ लिया. He was father of this internal medicine. At that time, 1974-75. He was retired in 1976 or 7 around. And I have attended his OPD. I am a lucky person that after 3 months of my entry into the 3rd year, he retired. But I have attended his OPD. बहुत soft spoken person and बहुत knowledgeable person. आप तस्वीर भी नहीं कर सकते. उन्होंने हमें हिस्ट्री टेकिंग सिखाई थी 3rd ईयर में. उन्होंने कहा फाइनल ईयर को नहीं बताता, मैं पहले 3rd ईयर को बताऊंगा. लिहाजा उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई और इम्पोर्टेंस बताई कि भाई आप हर चीज़ को जो है ना वो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की निगाह से भी देखें. बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको पार्ट 1 में लिया जाता है एग्जामिनेशन, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसको समझना ज़रूरी होता है. तो उसमें भी जो है ना मैं ये इस बात से बात निकल आई कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया करते थे. वो इसलिए देते थे, वो कहते थे कि अगर विटामिन जो हैं वो ख़ास तौर पर चिली चक्रवाई और दूसरे ग्राम नेगेटिव बेजलाए जो हैं वो विटामिन के को जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में. विटामिन के जो बाहर से आप लेते हैं उतना होता नहीं, अमाउंट नहीं होता. इसलिए विटामिन के की कमी हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स जो कि खुद माइक्रोबायोलॉजिकल जो है वर्ल्ड आपको दे रही है, जबकि आप खा भी नहीं रहे हैं. उसके बावजूद भी डेवलपमेंट देखें आप विटामिन डिफिशिएंसी का नहीं होता. बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए दिन तो फिर वो जो है ना सिम्टोमेटोलॉजी डेवलप होती है. ये इसलिए है क्योंकि वो जो है वो खुद भी सीक्रेट कर रहे होते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस को. और मेटाबॉलिज्म एंड द म्यूटालिज्म इन द गट
that is called microbiome, gut microbiome. So Bacteroides fragilis is an aero-tolerant है, anaerobic and organotrophic, capable of fermenting wide variety of the glycans available in the human gut microenvironment, and including the glucose, sucrose and fructose. Fermentation power बहुत ज़बरदस्त है, and it can also catabolize a variety of the biopolymers, polysaccharides and glycoprotein into smaller molecules, which can then be used and further broken down by other microbes. It helps in the digestion after entering into the small intestine. Fatty acids produced by the fermentation of the carbohydrate can serve as a source of energy for the host. अब इसका डेरिवेटिव वहीं पे प्रोड्यूस हो जाता है. एक तो प्योरली आप निकाल देते हैं जो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड्स. लेकिन मोनोसैकेराइड जब टूटता है डाइसैकेराइड से, तो उसके अंदर जो होता है वो एक पार्ट होता है जो कि फैटी एसिड सीक्रेट कर देता है, उसको यूटिलाइज करता है फर्मेंटेशन के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए. साइटोक्रोम ABD oxidase is essential for the oxygen consumption and Bacteroides fragilis, and can allow other obligate anaerobes to survive in the now oxygen reduced environment. Animals lacking the gut bacteria require 30% more caloric intake to maintain body mass. जिनके अंदर आपने कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो जो कैलोरिक वैल्यू उनकी होती है वो 30% रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये माइक्रोब्स आपको जो होते हैं ये खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे फैटी एसिड्स हैं, और दूसरे जो है ना खुद सीक्रेट कर रहे होते हैं, विटामिन सीक्रेट कर रहे होते हैं. कैप्सिटिक एसिड साइकिल को ये प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली, फिर जब एब्जॉर्ब हो जाती है जो सीक्रेशंस. इनका सेंसर सिस्टम एनवायरनमेंट का जो होता है बड़ा ज़बरदस्त है. द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल सेंसरी सिस्टम अलाउ द Bacteroides fragilis to survive, adapt in the ever-changing human gut microbe. The system is composed of or designed to effectively handle. ना इसके अंदर जो होता है वो बैक्टीरियोसाइड्स होती हैं एंड बाइल सॉल्ट, इसके ऊपर इफेक्ट देखें. The Bacteroides fragilis intestinal isolated secrete high levels of bacteriocin proteins and they are resistant to the other bacteriocins secreted by the other closely related isolates. तो आपस में मुकाबला हो रहा है, वो इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो उसके खिलाफ लड़ेगा, उसके खिलाफ जंग जारी है इसके अंदर जो इंटेस्टीन में हो रही है. दिस मैकेनिज्म बिलीव टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. अब इसके भी फ़ायदा ये होता है कि इनकी बैक्टीरियो, इसके पास तो है हथियार, दूसरों के पास इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कम से कम उनकी जो है इन्वेजन को ये रोकने में कामयाब हो जाता है. या आपने इन्वेसिव बैक्टीरिया को इनगल्फ किया है तो उसको भी ये कम्पीट बहुत ज़्यादा फाइट करेगा. बाइल सॉल्ट रेजिस्टेंस होता है, ये बाइल सॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, आपको पता है. इट यूटिलाइजेज एंजाइम्स सच एज बाइल सॉल्ट हाइड्रोलेज टू रेजिस्ट द डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑफ द बाइल सॉल्ट्स. बाइल सॉल्ट इसको खा जाएंगे बाइल एसिड के साथ. Detergent activity of the bile salt can memorize bacterial membranes, which can eventually lead to the membrane collapse or cell damage. अगर ऐसा ना होता तो वहाँ पे फिर डेंजर ये होता कि यूटिलाइज कर जाते हैं तो ये जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स proteins such as catalase and superoxide diamidase and alkyl hydroperoxide reductase protect the organism from harmful oxygen radicals, free oxygen radicals. अगर वो अंदर आ गए तो वो इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन में तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, ये तो डेथ हो जाएगी. इनके पास ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि पहले ही, इससे पहले कि वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेशन कर दें वहाँ पे तो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को प्रोड्यूस नहीं होने देते. एंड दिस परमिट्स growth in the presence of the nanomolar concentration of the oxygen.
अब ये जो है नैनोमोलर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नील, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स बैक्टीरियोफ्लोजेलस पॉलीसैकेराइड ए, जिसे PSA कहते हैं आप, पॉलीसैकेराइड, इट इज़ नॉट प्रोस्टाग्लैंडिन ए, इट इज़ पॉलीसैकेराइड ए, has been shown to protect animals from experimental diseases. ये जो है एनिमल में एक्सपीरियंस किया, कोलाइटिस से बचाते हैं, अस्थमा और परमानेंट इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं. Bacteria fragilis mutants lacking surface polysaccharides cannot easily colonize the intestine. तो इसलिए इस चीज़ का होना ज़रूरी है इसकी सर्वाइवल के लिए. Therefore, the polysaccharide A colonization of the bacteria in the gut mucosa induces regulatory T cells and suppress pro-inflammatory T helper 17 cells. इतना डिस्ट्रक्शन से ये म्यूकोजा बच जाती है. पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि द बैक्टीरिया फ्रेजिलिस मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड बैक्टीरिया डी, जो इसकी जीनस है, इन एनारोबिक इन्फेक्शन लाइक द अदर वन प्रीविटोला, इसी तरह से फ्यूसीफॉर्म दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द GI माइक्रोबायोटा. The Bacteroides fragilis, the most prevalent organism in this group, fragilis, and accounting for 41 to 78% of the isolate of the group. These organisms are resistant to the penicillin. अब यहाँ पे important बात होगी. By virtue of the production of the beta lactamase प्रोड्यूस करते हैं, and by other unknown factors. I think जो पहले हमने डिस्कस किए हैं कि बहुत सारे इसमें प्रोटीन सीक्रेट होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें वो इसको बचा लेती हैं. तो बीटा लैक्टेमेस जो होता है वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है. लिहाजा आप अगर अमोक्सिसिलिन क्लोरोनिक एसिड दे भी रहे हैं तो ये तो इफेक्ट नहीं करेगा, इसको डेथ इसकी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है. दिस ग्रुप वॉज फॉर्मली क्लासिफाइड एज सब स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रेजिलिस. इसके अंदर दूसरे स्पीशीज़ भी शामिल हैं जिनको याद रखना ज़रूरी नहीं है. अगर वो जो है वो विजाना में है और जहाँ पे भी हैं उसके नाम उस लिहाज से नाम रख दिए गए हैं. दे हैव बीन reclassified into the distinct species on the basis of the DNA homology studies. ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम है, उन्होंने इसको सब क्लासीफाई किया है, रिक्लासीफाई किया है. Bacteroides fragilis, formerly known as the Bacteria species की fragilis, is often recovered from the blood, pleural fluid, peritoneal fluid, wounds and the brain abscess. तो अगर यहाँ पे जो है ना सेप्टिसीमिया किसी को है तो आपको इसका कवरेज चाहिए. प्लूरल फ्लूइड या प्लूराइटिस हुआ है उसमें भी ये आपको देना होगा अगेंस्ट एनारोब्स. और पेरिटोनियल फ्लूइड एसाइटिस, वुंड्स इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है किसी को, ओपन इन्फेक्शन हुआ है और ब्रेन एब्सेस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनिज्म की. ऑल्दो द Bacteroides fragilis group is the most common species found in the clinical specimen. It is the least common bacteroids present in the fecal microbiota. 0.5% of the bacteria present in the stool. Their pathogenicity partly results from their ability to produce the capsular polysaccharide, which is protective against the phagocytosis and stimulates the abscess formation. और एक और प्रॉपर्टी ये कि बैक्टीरिया फ्रेजिलिस इज इन्वॉल्व इन 90% ऑन एनारोबिक पेरिटोनियन इन्फेक्शन. इट ऑल्सो कॉजेज द बैक्टीरियमिया एसोसिएटेड विद इंट्रा-एब्डोमिनल इन्फेक्शंस जो आप पढ़ते हैं. पेरिटोनाइटिस है, एब्सेसेस हैं, रेट्रोपेरिटोनियल एब्सेसेस हैं, फॉलोइंग द रप्चर ऑफ द विस्कस लाइक अपेंडिक्स एंड सबकटिनियन एब्सेसेस और बर्न्स नियर द एनल कनाल, पेरिएनल एब्सेस. वहाँ पे भी इन्वेडर्स है ये वहाँ पे. दो इट इज ग्राम नेगेटिव, इट हैज़ एन ऑल्टर्ड lipopolysaccharide and does not cause endotoxic shock नहीं होता इसमें. Untreated bacteria fragilis infection have a 60% mortality rate. अगर ये इसका सीवियर सेप्टिसीमिया में जाएगा पेशेंट और आपने मैनेज नहीं किया तो बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट है. ट्रीटमेंट में ज़ाहिर है कि वो जो कॉमन ड्रग्स थी जो कि बीटा लैक्टेमेस के लिए भी आप देते हैं, जैसे कि अमोक्सिसिलिन क्लोरोनिक एसिड, या इससे ऊपर चले जाएं कि सिवोटॉक्सिन है, डोमोक्सिफ्लोक्सिन है, क्लिंडामाइसिन है, लो लेवल्स ऑफ सस्टेबिलिटी, ये फ़ायदा तो करेगी. लेकिन ऐसा आदमी जो कि ड्राउजी हो गया है, ऐसा आदमी जिसको मेनिंजाइटिस हो गया, जिसको ब्रेन एब्सेस हो गया, उसमें जो है दूसरी ड्रग्स जो हैं वो
इस्तेमाल हो जाएंगी, जैसे पेपरसिन है और टेजोबैक्टाम्स हैं, मीरोपेनम्स हैं, ये ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसी नहीं की जाती हैं तो इसको जो है ना वो मिला देते हैं मोक्सिफ्लोक्सासिन से, वो दोनों को साथ दे देते हैं ताकि सारा कवरेज हो जाए। और प्लस इसमें कर देते हैं मेट्रोनोडाजोल हैव हाई सेंसिटिविटी। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस है एक्चुअली, हालांकि ये एंटीपैरासिटिक ड्रग है, लेकिन ये ड्रग बड़े काम की ड्रग है। अब मीटाजोक्सानाइड भी ड्रग और आई है जिससे एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स में है, लेकिन हमने हमेशा जो है ना ट्रिपल रिजीम देते हैं मेट्रोनोडाजोल के साथ। देखा होगा अगर आप JPMC या SMC में काम कर रहे हैं, उसके पास नहीं है अफोर्डेबिलिटी, तो आप क्या करते हैं, आपके पास ऑगमेंटिन इंजेक्शन होता है जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट आपको, आपके पास ग्राम नेगेटिव के लिए होता है जेंटामाइसिन, और आपके पास जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए होता है मेट्रोनोडाजोल। तो आप 1 ग्राम जो है 1.2 ग्राम इंटरवेनस ऑगमेंटिन को लगाएंगे 8 आवरली, प्लस जेंटामाइसिन 80 मिलीग्राम लगाएंगे 8 आवरली, प्लस 100 ml मेट्रोनोडाजोल सोल्यूशन जो फ्लैजिल सोल्यूशन के नाम से आता है, वो भी 8 आवरली लगाएंगे। एटलीस्ट 7 डेज तक ये थेरेपी जारी रहेगी। अगर फर्स्ट अगर अफोर्ड कर सकता है पेशेंट तो इसको किसी में से इसके साथ मिला दें, मोक्सिफ्लोक्सासिन को मीरोपेनम के साथ, या टेजोबैक्टम को मोक्सिफ्लोक्सासिन के साथ, या पेपरसिन को मोक्सिफ्लोरिन के साथ, ये मिला देंगे भी तो स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉस्टली ड्रग्स हैं। बेहतर है कि आप जो है ना जो इनमें से एक चूज़ कर लें, बेशक उसके साथ आपको ऐड करना होगा मेट्रोनोडाजोल, एंड दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। तो अगर दूसरी ड्रग इससे रिलेटेड और भी एंटीपैरासिटिक, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिक थेरेपी इसके अंदर होती है। तो ये एक छोटी सी द डिस्कशन विच आई हैव मेड हियर, जस्ट डिलीवर्ड टू यू just for the sake of the knowledge that they are anaerobic bacteria, their importance has been given to you. I think although the subject definitely is dry and boring, it's a boring subject, but you have to understood before going to any examination. This is my message.